Okay, so let's continue. Yes. So हम yesterday इंडेक्स और मैच फंक्शन के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे थे. अब इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं एंड देन फिर फाइंड आउट अबाउट द एक्स लुकअप. Okay. अभी बिल्कुल सिंपल सा एक शॉर्ट डेटाबेस प्रिपेयर करते हैं श्वेता टू गेट मोर एंड मोर अबाउट इंडेक्स एंड मैच फंक्शन. फॉर एग्जांपल हियर आई हैव item code, item name and their prices. अब यहाँ इन आइटम्स कोड गिवन है, नेम गिवन है और इनकी प्राइसेस गिवन है. Hmm. अब अगर मुझे इस डेटाबेस में से कुछ भी लुकअप करना है बट यूजिंग द इंडेक्स फंक्शन, देन हाउ इज इट पॉसिबल? लेट्स टेक इन फर्स्ट एग्जांपल. लाइक हियर I want to enter the item code, either Z652 or anyone else, and I want to get the item name here. Okay. So this is the basic example. So equals to get the value of any item code, we have to use here index, because index function returns a value at the specified position. Right. Okay. Hmm. So if the first argument is saying please select the array, so here in array we will select the whole database. Yes. You can skip the heading or you can include the heading. Okay, Okay. put comma. Now it is asking row number. So first of all, Aishwarya, you have to look here that here we need to look up Z652 item code, and this item code is given in rows or in columns. For this purpose, I tell you one trick. For example, here I have given the item code, and please recite the cell reference E41, E42, E43, E44. ये जो Okay. आइटम्स कोड जिन सेल्स में गिवन है, मैं उनके रेफरेंस को यहाँ पर बता रही हूँ कि एक आइटम कोड है A41 में, नेक्स्ट वन इज A42, नेक्स्ट वन इज A43, नेक्स्ट वन इज A44. इट मींस यहाँ पर कॉलम तो A ही है Hmm. एंड रोज आर गेटिंग चेंज. सो Yes. इससे ये मीनिंग निकलता है दैट वी हैव अरेंज आइटम्स कोड इन रोज. Okay. सो Okay. ये जो Z652 आइटम कोड है, ये किस रो में गिवन है, वी नीड टू फाइंड आउट. And to get the row number of this particular item code, we have to apply the function here match. Because match function से ही आपको ये पता लगेगा कि इस item code की position क्या है. So it is asking for the lookup value, और lookup value में आप select करोगे Z652, put comma here. Now it is asking lookup array. So हम कहाँ lookup करेंगे इन item code को? इस array में, Yes. put comma, and to get the exact answer, you have to write down here 0 for exact match. Now close the bracket and put comma here. अब यहां से एक्सेल को ये पता लग जाएगा कि Z652 is given in which row? It is given in fourth row. मैं Right. चाहती तो डायरेक्टली फोर्थ रो नंबर लिख सकती थी, बट जैसा मैंने बताया कि भी डेटाबेस शॉर्ट है, तो यू कैन सिंपली राइट डाउन द 4.
बट अगर डेटाबेस लार्ज हुआ तो ये थोड़ी कि आप खुद से रो नंबर लुकअप करोगे. नाउ इट Okay. इज आस्किंग अबाउट द कॉलम नंबर. मीन्स अब हमें प्राइस फाइंड आउट करना है, और प्राइस कौन से कॉलम पर गिवन है? थर्ड कॉलम पे. देन यू कैन सिंपली राइट डाउन द थर्ड कॉलम, जैसे आप VLOOKUP में करते आए हो. बट इफ यू ठीक है. से मैम कि इज देयर इज एनी वे टू फाइंड आउट द कॉलम नंबर ऑफ प्राइस? यस. अगर आपको कॉलम नंबर भी लुकअप करना है, देन फॉर दिस पर्पस यू हैव टू अप्लाई द मैच फंक्शन अगेन. Or just to reduce your formula, you can simply write down the column number 3. Okay. Close the Okay. bracket. And here we have the name of Z652. Sorry, for the employer, sorry. For the item name, I have to write on here the column number 2. Okay. Okay. Column number 2. Yeah. Yes. Okay. Yes. Match So and index. if you remember about the VLOOKUP, तो मैंने आपको ये बताया था कि VLOOKUP की एक limitation है, it always search the value from left to right column. But what Yes. about right to left column? So for this purpose, you can also use the same function here. For example, if I want to find out here, वो कौन सी आइटम है जिसका प्राइस 1200 है. Now I want to get the name of the item whose price is 1200. Okay. So for this purpose, you will apply the function index. Again, Yes. in array, you will select the whole database, Yes. put comma. अब 1200 कौन सी रो पे given है? We are not aware about this. So Yeah. here we The need to apply values. the function here match. Lookup value may will select the name column. 1200. 1200. Oh, sorry. Yeah. 1200. In lookup array, we will select the name column. No. Price. But because 1200 को वो लुकअप कहाँ करेगा? Oh, okay. Yes. Yeah. Then match type 0, close the Yes. bracket, put comma. अब आपको define करना है that if you are looking for a name, the name is given in which column? So 2. Yes, Okay. it is keyboard. So now you can change the price to get the item name of other. अब यहाँ पर मैं एक सिनारियो चेंज कर देती हूँ. अब यहाँ पर ईश्वर है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ये सब है. Okay. तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? कि whatever the item name we are going to enter here, and whatever the brand, find out the price. सो क्वेश्चन ऐश्वर्या यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर सोनी ब्रांड वाले टीवी का प्राइस फाइंड आउट करना है. सो अगेन यू हैव टू क्राइटेरियाज हियर. Yes. So index and match. इन array,
We will select the whole database. Yes. Put comma. Now it is asking row number. So यहाँ हमें पता है कि जो टीवी है, इट मीन्स जो आइटम्स हैं, दे आर ऑल्सो अरेंज इन रोज, और जो ब्रांड्स हैं वो भी हमने रोज में ही अरेंज कर रखे हैं. Yes. तो यहाँ पर हमें टीवी का रो नंबर भी फाइंड आउट करना है, हमें ब्रांड सोनी का भी रो नंबर फाइंड आउट करना है. So for this purpose, you will apply here match function. Okay. Now our first lookup value is TV, and we'll put out here and operator, and we'll select the second lookup value is Sony. Okay. Put comma. Now it is asking for lookup array, means now Excel is asking where to look up for TV. So you have to look up for TV in item name, And you have to look up for Sony in brands. okay. Now put comma, match type 0, close bracket, put comma. Now it is asking column number, so we are finding the price, and price is given in third column of the database. Close sub bracket and enter. It is 39,000. Look at here. It is stating right answer or not? Yes. Right? Yep. Let's find out, could we solve this problem using XLOOKUP? We have to look for two of them. So XLOOKUP, the first lookup value TV. Let's try the same operator, and the second lookup value is Sony. Put comma. Then it is asking about the lookup array. So we will look up for the TV in items name, and we will look up for the Sony in the brands. And in return array, our answer would be price. Am I right, Aishwarya? yes. Now close the bracket and press enter key. Yes, we got this. So both Oh. queries could be solved through index and match or using XLOOKUP. Look at here, the formula of index. And here is the formula of XLOOKUP. Yes. Okay. Now we'll get back to the first one, the last one query, जहां पर हमें एक क्राइटेरिया गिवन है कॉलम्स में और दूसरा क्राइटेरिया गिवन है रोज में, राइट? यहीं पर लास्ट लीव किया था. Yes, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेरी को अगेन इंडेक्स एंड मैथ से सॉल्व करते हैं. आफ्टर दिस वी विल अप्लाई द XLOOKUP फंक्शन. Equals to index. Array we will see the whole database. The whole database. Put comma. अब यहाँ पर पहले है प्रोडक्ट, देन है साइज. अब जो साइज है 6XL, इट इज गिवन इन रोज, और जो आइटम है शर्ट, इट इज गिवन इन कॉलम्स. एम आई राइट? Right. But the second argument is asking first of all about row number. So here we need to get the row number of 6XL. Yes. Apply the function of match. Our lookup value is 6XL. Put comma. Our lookup array is size. Put comma. Our match type would be 0. Close the bracket. Put comma. Now it is asking about the column number. So shirt is given in column. So here I'm going to apply the match function again. Okay.
One more thing, I have done it wrong because I have selected the whole database including heading. So that's Yeah. why the lookup array of size would be count from heading 2. Okay. Otherwise, Okay. leave the heading. But if you are including heading, then you have to select the lookup array including heading 2. Okay. Understood now. Now we are applying match function again to get the column number of shirt. So Aishwarya, here our lookup value would be shirt, Yes. and our lookup value would be the column from E26 to E26, I see. Okay. and match type would be 0. Now close the bracket of match and close the bracket of index function. But Here we wouldn't we apply. have to put in the column number for price? No, there is no need. The reason being that we have given the row number and column number both. Okay. Okay. So it's just like an intersection. Look at Right. here. Right. Excel will look up for the row number of 6XL, and 6XL is given in which row? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th, right? This is the Yeah. row number. After this, you are looking for the column number of shirt. So 1, 2, 3. Shirt is given in 3rd 3. column. Now, do the intersection, then the value would be rupees 2700. Okay. Okay. Now we'll solve the same query through XLOOKUP. Okay, so our first lookup value is 6XL, right? Yes. Comma. And 6XL will be lookup in the array of this. Am I right? Yes. Okay. Now put comma, and I'm going to apply XLOOKUP again. This is called nested lookup. Okay. Okay. So our next lookup value is shirts, put comma, and lookup array would be from B26 to F26. Now put comma, it is asking about the return array, and return array would be the price. So here I'm selecting the prices of all items. Now close the bracket of XLOOKUP. Now close the bracket of main XLOOKUP and press enter key, and here we got the answer. Oh, okay. Okay. Last हम yesterday इसी पर stuck हुए थे, right? हाँ मैम. Because I miss one thing, क्योंकि मुझे लगा कि XLOOKUP जो है वो किस पैटर्न पे वर्क कर रहा है, क्योंकि मैं इसमें एंड यूज कर रही थी, याद है? हम्म. एंड ऑपरेटर जो है वो इस एग्जाम्पल में, इस सिनेरियो में वर्क करेगा जहां पर बोथ क्राइटेरियाज आर बेस्ड ऑन कॉलम और आर बेस्ड ऑन रोज, राइट? लुक एट हियर, यही क्वेरी अभी हमने एक्सलुकअप से सॉल्व की है ऐश्वर्या। यहाँ एंड ऑपरेटर वर्क कर गया है। द रीजन, क्योंकि यहाँ पर टीवी और सोनी दोनों ही रोज में अरेंज है। Yes. Yes. Okay. बट इस क्वेरी में क्या है कि एक क्राइटेरिया हमारा कॉलम में है और एक क्राइटेरिया हमारा रो में है। साइजेस जो है वो रोज में अरेंज्ड है, प्रोडक्ट्स नेम जो है वो कॉलम्स में अरेंज्ड है। सो दैट्स हमें यहाँ पर एक्स लुकअप को 2 टाइम यूज करना होगा। Okay. Okay. इसे हम कहते हैं नेस्टेड लुकअप, जहां आप फॉर्मूले के अंदर भी एक और फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। Okay. अब अगर तो ये जो सेकंड एक्स लुकअप हमने अप्लाई किया था वो हमने लुकअप अरे में इंसर्ट किया था, रिटर्न अरे में इंसर्ट किया था, right? रिटर्न एरे से हमने अगेन लुकअप स्टार्ट कर दिया। Okay. सो अब अगर मैं यहाँ पर सेम डेटाबेस में आ गई हूँ, द फर्स्ट वन, द ओरिजिनल डेटाबेस,
अब इसी डेटाबेस से अगर आपको कोई भी वैल्यू लुकअप करनी है, तो इस पर्पस के लिए वी हैव वन मोर फॉर्मूला, वी हैव dget. डेटाबेस फंक्शंस की कैटेगरी से वी हैव अ फॉर्मूला विद द नेम dget. You are able to see the worksheet? Yes, ma'am. वैसे ही फॉर्मूला मैं डेटाबेस फंक्शन की कैटेगरीज जब करवाती हूँ तब बताती हूँ, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट इज ऑल्सो अबाउट लुकअप. So let's take a simple example. Like here I have write down the employee code and you are looking for the name of employee. So here I have write down the employee code E10 and we are looking for the name of employee. So we are applying here dget formula. Now look at the formula. There are only three arguments: the database, the field, or the criteria, right? Mm-hmm. So if we are talking about the database, then we'll definitely select the whole range. Put comma. Now it is asking about the field, what you are looking for. So we want to find out the name. Am I right? Yes. Yes. So in field, you will select the column title which Okay. you are looking for. So from the database, select the title name. Now put comma. After this, it is asking you to select the criteria. What is your condition? Okay, so our condition is that employee code should be E10. So Okay. while selecting the criteria, Aishwarya, remember one thing here, you have to select the heading 2. Okay. Because dget function works on the vertical database and works on the title basis. Now close the bracket and you have a name Ishan. It is right because here employee code is E10 and the name is Ishan. So आप ये भी देख सकते हैं ऐश्वर्या कि यहाँ पर लुकअप के लिए हम dget फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली फॉर्मूला को अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं अलग है. Let's take in another example. यहाँ पर employee's name given है and we are looking for the total sale. So employee name is Jagat. Now you guide me how to apply dget. Okay. For database, we will select the entire. इनके ऐश्वर्या आपको इसी तरीके से फॉर्मुलाज लगाने में कोई इश्यू रेज होता है, देन व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन प्रेस हियर कंट्रोल ए. सो कंट्रोल ए से आपके पास फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. आप यहाँ से भी फॉर्मूला अपना कंटिन्यू कर सकते हो. Okay. Okay. And it will also guide you about each and every argument. So in ठीक है. database, what we need to do here? We will select the entire database. Correct. Now in field, In field, we'll select the total heading name. correct. And the criteria, And the criteria will select the name Jagat. correct, including title. Oh, And yeah. so अब यहाँ पर अगर हम लोग, मैं यहाँ पर सारी टाइटल्स मोस्टली कॉपी कर रही हूँ एक्सेप्ट डेट. सो अब क्वेश्चन मेरा ये है ऐश्वर्या, जिस एम्प्लॉय का कोड E13 है, फाइंड आउट द होल रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, his name, his branch, his sales of each and every month, the total sale and average and all. सो फॉर्मूला आपको इस तरीके से लगाना है कि हम सिर्फ फॉर्मूला एक ही सेल में लगाएंगे और ड्रैग करते समय वैल्यू सबकी आ जानी चाहिए. Okay. Okay.
राइट, गॉट इट। तो फिर डेटाबेस के लिए विल सिलेक्ट द एंटायर डेटाबेस इन डॉलर एंड लॉक इट अप। Good. So I will press here F4 key. Yeah. Mm-hmm. In For field, uh, field will select the particular, then for name we'll select the name. this one, right? Yeah. And here we know that when we copy our formula, then column number will get changed from C to D, D to E, E to F, right? But the row number will remain constant. So here I need to log here the row number 1. Uh, we should actually leave it as it is now, because it is supposed to be changing. If we lock it, how would it copy? Okay, so if we keep it same, means I'm not locking anything else. The reason being that because we are copying our formula in columns, not in rows, right? Okay, That's why okay. there is no need to log this cell. But where is it required? We'll show in another example. Now move to the criteria. So our criteria would be employee code E13. Yes, yes. Do I need to log this or not? Yes, I think, yeah, we'll need to lock this Yes. one. Okay. Yes. Here we have the result. And suppose if Okay. your employer says, ma'am, I know I can get the detail of another employer in the same manner. I can change the code here. Like for example, if I want to look up the detail of E07, I simply write down the code E07 here, right? Mm-hmm. But now your employer wants to please find out the record of E07 just below. Um, What do you think? Here we need to apply the formula again or we can copy it. I think we can copy it. Then look at the formula here. First of all, okay, you can log the row of C1. Mm-hmm. Okay, but what it would create an issue, it is about the criteria. Okay. Let me try this because I cannot select these two or I cannot select it single. Mm-hmm. Maybe you could just select E code and then press Control and select E7. Wait a moment. Let me check my experiment will work or not. Look at here. No, it is showing the same. Same from Jagat, because the C1 is locked now. But in C1, but column numbers are getting changed. Rows is same, the number 1, and that's why I logged it. But Oh, the okay. issue is about the criteria because in DGET formula, it asks you about to select the title too. Like this. What if you exclude the E13 and just select E code and E7? It will not work. We'll show you. Wait. No. Okay, yes, you see, if I skip the title,
No, select the title, but like You are saying that only to select E13 or what? only to select EO7 and E code. Means all together. Uh, yeah, and then exclude E13 somehow. No, it is showing error. It will not work. The only option I have left here, like I'm selecting title here, okay, and keeping it locked, and sorry, A22. '22, '23. Fine, let it see if it will work or not. Otherwise, we have to apply the formula again. No, not possible. Just because it is creating an issue. It's okay. It What doesn't if mean I that take the E code out of it and only select E07? no, it will not work. It will also ask you to select the title Okay. because the in dget function, how it will search E13. It will search in the particular title. So for this query, you have another options too. You can use XLOOKUP, you can use VLOOKUP. It doesn't matter that you have to solve this query this through dget only. So we have 5 or 6 formulas regarding lookup function. According to the database, according to the query, you have to apply the formula. Right, Okay. Ishwarya? क्योंकि बिकॉज ये वाली जो क्वेरी है जहां पर हम ईच एंड एवरी वैल्यूज को लुकअप करना चाह रहे हैं इट इज पॉसिबल बट साइमल्टेनियसली 2 वैल्यूज को लुकअप करना इट इज नॉट पॉसिबल बट स्टिल आई आप एक बार डेटाबेस को देखकर मैं आपको सेम फाइल शेयर करूंगी एक बार आप खुद से ट्राई करना इफ इट गेट पॉसिबल बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मैं देख पा रही हूँ डिगेट इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा देन गो फॉर वी लुकअप अगर साइमल्टेनियसली आपको 2 कोड की वैल्यू को सर्च करना है तो इसे अगर हम वी लुकअप से सर्च करना चाहते हैं देन व्हाट वी कैन डू हियर equals to VLOOKUP. Fine. Our lookup value would be E15. Right, Yes. Ishwarya? And in this case, what will I lock here? I will lock here the column number. Okay. Put comma. And in table array, I will select the table from the employee code to the end. Okay. Yes. And we'll log this too. Now, what about the column index number? So what would I do here? I will select the cell here. Here I will write down the column number. Now it is blank, but after this I will write down the column number. And here I will log the column number. Range lookup, write down 0 and look at here. 2. Sorry, I have to create the series. Sorry, I have to here log the row number. By mistake, I have logged here column number. Now it is working or not? Yes, ma'am. Now look at the formula. And if you have any doubt, please ask freely. In this we selected A22. A22 was for lookup value. A22. Okay, E code. Then for the table array, in the A22 you locked only the column.
In A22, I have logged only column. The reason being that the second employee code is given in row number 23. Okay, understood. So A23. So A is constant, but the row number is getting changed. Number change, yeah. And for the table array, we have selected everything from the right to the right from eCode, and then we've moved to a column index number, which is B20. What was the reason we selected the? The column number, right? Mm-hmm. See, I have mentioned here column number 2, 3, 4, 5, 6, 8. The reason being that otherwise I have to enter the column number on manually. Like for example, we generally apply the formula. Wait a moment. Do you remember I have told you to solve this query using two method? Means हम जहां पर आप multiple values को look up कर रहे हैं तो आप इस query को two methods से solve कर सकते हैं. The first one method is state that कि do write down the column number just before the title here. और जब आप यहाँ पर कॉलम नंबर सेलेक्ट करते हो, here I am selecting the column number 2, तो क्या होता है फॉर्मूला ड्रैग करने पर it is getting the column number 3 automatically, 4 automatically, right? Mm-hmm. Otherwise, I told you one more method. If you want to get the multiple values, just select all the cells together and write down here VLOOKUP. Lookup value would be whatever the code you will write down here. The table array, select the whole table from the employee code. The column index number, do open the